'Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I can taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Why you never said you felt that way? 'Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But it ain't too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पोल्ट्री फार्म पर। देखते हैं अंदर से कैसा है। तो दोस्तों ये है हमारा पोल्ट्री फार्म। इसमें बच्चे अभी बहुत बड़े हो गए हैं। ये मुर्गे बहुत बड़े हो गए हैं। थोड़ा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों ये बच्चे अब मुर्गा बन चुके हैं। ये मुर्गे देखो कितने बड़े हो चुके हैं। ये सफ़ेद वाले डब्बे में से दाना खाते हैं ये, और रेड वाले डब्बे हैं जो लाल वाले, उनमें से पानी पीते हैं। और ये पानी सिर्फ पैप से आता है, टैंक से। ये पैप हैं लगे हुए नीले इनमें से पानी आता है, और ये टैंक से आता है पानी पैपों में। और फिर पैपों में से डब्बों में जाता है पानी, तब जाके बच्चे पी पाते हैं पानी। दोस्तों ये देखो इधर साइड में इकट्ठे हैं, इसमें होता है दाना रखा हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा पोल्ट्री फार्म? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।